Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do the question answers of chapter 8, that is Saint Mother Teresa of Kolkata. So let's get started. Question number 1. When was Mother Teresa born and what was her childhood name? Answer. Mother Teresa was born on August 26, 1910 and her childhood name was Agnes Gonza Bozaiu. Okay. So, Mother Teresa, she was born on August 26 and the year was 1910 and her childhood name was not Mother Teresa. Her childhood name was Agnes Gonza Bozaiu. Okay. So it was her name. Now, next question is, how old was Mother Teresa when she reached Kolkata? Answer. Mother Teresa was just 19 years old when she reached Kolkata. So you have to tell the age at which she reached Kolkata. So she was only 19 years old at the time when she reached Kolkata. Okay. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ. तो उनका जन्म हुआ है 26 अगस्त 1910 को और उनका बचपन का चाइल्डहुड मीन्स बचपन का नाम क्या था. तो उनका बचपन का नाम था एग्नेस गोंजा बोजायू. ओके. सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है जब मदर टेरेसा कोलकाता पहुंचे तब उनकी एज क्या थी. तो मदर टेरेसा सिर्फ 19 इयर्स के थे जब वो पहुंचे कोलकाता. थर्ड क्वेश्चन इज नेम सम बिल्डिंग्स मेड बाय मदर टेरेसा. सो यू हैव टू टेल द नेम्स ऑफ द बिल्डिंग मेड बाय मदर टेरेसा. सो शी you know that she managed to start various institutions. Okay, so two such institutions were Nirmal Hriday and Shishu Bhavan. Okay, these are the some buildings made by Mother Teresa. So Mother Teresa उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स बनाई, उनके आपको नाम बताने हैं. तो निर्मल हृदय और शिशु भवन कुछ ऐसी बिल्डिंग्स है जो मदर टेरेसा ने बनाई. ओके, एंड शी started this institution for mentally and physically challenged children. Okay, that we have already discussed in the chapter. Now moving on to question number 4. Name some awards given to Mother Teresa. So you all know that she dedicated her entire life for the welfare and for the service of other people. So she was awarded many prizes. Okay, so you have to tell the prizes. Mother Teresa was awarded the Nobel Peace Prize in the year 1979, the Bharat Ratna in the year 1980 and the Jawaharlal Nehru Award for International Peace in the year 1972. So she was awarded all these prizes. So first one is Nobel Peace Prize year 1979, then Bharat Ratna Award in the year 1980 and Jawaharlal Nehru Award for International Peace in the year 1972. तो इसमें आपको अवार्ड्स के नाम बताने हैं जो मदर टेरेसा को दिया गया. ठीक है, क्यों दिया गया? उनकी जो है निस्वार्थ सेवा के लिए जो उन्होंने सोसाइटी के लोगों की. ठीक है, गरीब लोगों की, डाउन ट्रोडन लोगों की, उनके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिला, भारत रत्न अवार्ड मिला, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड मिला फॉर इंटरनेशनल पीस मीन्स यानी कि शांति के लिए. ठीक है, तो पहला अवार्ड उनको 1979 में मिला था, फिर भारत रत्न उनको 1980 में और जवाहरलाल नेहरू अवार्ड उनको 1972 में मिला. ओके. नाउ डी, थिंक एंड आंसर. What is the contribution of Mother Teresa towards the sick and the poor people? Contribution means what she has done for the sick and the poor people. This you have to tell. Answer. Mother Teresa dedicated her entire life to serve the sick and poor. She opened various institutions to take care of poor and homeless children.
So you have to tell the contribution, okay, what she has done for poor and sick people. So she dedicated her entire life for poor and sick people, and she opened various institution so that she can take care of the homeless and poor children. So that she has contributed. Okay, तो आपको बताना है कि मदर टेरेसा जी ने क्या क्या मीन्स क्या किया गरीब और बीमार लोगों के लिए, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब उन्होंने क्या, उनका रोल रहा, क्या उन्होंने किया। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है न्यौछावर कर दिया गरीब और बीमार और गरीब लोगों की सर्विस के लिए, सेवा के लिए। उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थाएं खोली जहाँ पे गरीब और जिनके पास घर नहीं है, बच्चे हैं, उनकी देखभाल करने के लिए, ठीक है। वो हमने पढ़ा है, निर्मल हृदय शिशु भवन, ये सब उन्होंने खोला था, ठीक है। सो with this we have done the question answer of chapter Mother Teresa. Okay, now in earlier class only one topic was left, that was the use of since and for. Okay, so this we will do in next class. Okay, so you write down these question answers in your notebook in a neat and clean handwriting. I hope you understood today's class. Thank you so much. Have a nice day. Bye.